Good morning, students. Today we are starting the chapter 1 of history named The French Revolution. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. State of alarm means they were in situation of danger. The king had commanded troops to move into the city, but the rumor spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. So, because of which, some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form People's Militia. Now, what is People's Militia? People Militia means those people who had training of soldiers but they are not soldiers. They broke into a number of government buildings in search of arms, and they broke in various numbers of government buildings for the arms. They attacked the government buildings in search of arms. Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city. Now, some of the hundred of people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. Now, what is fortress prison? The fortress prison is the prison which is made of a special fort or prison which is in fort, okay, whose name is Bastille, where they hope to find hoarded ammunition. Hoarded ammunition means that guns and pistols which are stored, okay, that is called hoarded ammunitions. In the armed fight that followed, अब यहाँ पे जो अटैक किया था ये सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल्स ने, मिलिशिया ने, उस अटैक में कहाँ का बेस्टाइल का जो कमांडर था वो मारा जाता है. दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम व प्रिजनर्स रिलीज्ड. और वहाँ पे कुछ 7 ही प्रिजनर्स थे जिनको रिलीज कर दिया गया. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. अब लोग बेस्टाइल से हेट क्यों किया करते थे? Why the people of Paris hate the Bastille? Because king used to imprison people without any reason, and their relatives cannot meet them. Fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. Souvenirs means हम याद के लिए उसके जो फोर्ट के टुकड़े, क्योंकि उसके पत्थर जो होते थे बहुत कीमती प्रीशियस स्टोन्स का फोर्ट बना होता था, ठीक है ना. तो उन पत्थरों को लोगों ने मार्केट में सेल किया, कुछ लोगों ने याद के तौर पे उस पत्थरों को रख लिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. द डे दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री आउटसाइड. अब ये दिन ऐसा था कि पेरिस के अंदर और पेरिस के बाहर हर जगह दंगे फसाद हो रहे थे. क्यों हो रहे थे? पहली बात कि कुछ लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हाई प्राइस हो रहे थे खाने पीने की चीज़ों के, ब्रेड के प्राइस मच हायर थे, है ना, महंगाई बढ़ रही थी, जिसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पेरिस के अंदर भी पेरिस के बाहर भी. मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, काफ़ी समय बाद जब हिस्टोरियंस ने देखा कि they saw it as the beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. अब वो कहते हैं कि ये तो शुरुआत है फ्रांस में इस किंग की
शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होगा। ओके, though most people at the time did not anticipated this outcome, how and why did this happen? This is all this first page all about. Now turn the page. Actually, your chapter starts from here, the French Revolution. This page is the cause of French Revolution. Okay, now turn the page, come here. Now this, a French society during the late 18th century. In 1774, Louis XVI of Bourbon family of king ascended the throne of France. अब 1774 में लुइस किंग, जो बर्बन फैमिली को बिलोंग करता था, उसने किंग की गद्दी पर राज किया। अब लुइस 16 1774 में फ्रांस का किंग बन गया। He was 20 years old and married to Austrian princess Marie Antoinette. Upon his succession, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France. अब जैसे ही लुई 16 राजा बनता है फ्रांस का, वो देखता है कि उसका जो ट्रेजरी है, उसका जो खजाना है, फ्रांस का खजाना एकदम ख़त्म हो चुका था। उसके ख़त्म होने का कारण क्या था? लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर विच ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फ्रांस। काफ़ी समय से जो युद्ध चल रहा था, उसके कारण फ्रांस का सारा खजाना ख़त्म होता जा रहा था। Added to this, the cost of maintaining the extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. अब ये खजाना खाली होने का एक और कारण था कि लुइस 16 जो उस समय फ्रांस का किंग था, वो क्या किया, उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, किससे? ब्रिटेन से, उसने अपना पैसा खर्च किया, उनको वॉर में मदद करने के लिए पैसे दिया, ठीक है ना, जिसके कारण बिलियन लीवर्स मीन्स बिलियन ऑफ पाउंड। लीवर इज अ करेंसी ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम in 1774. Now it became pound. Now, billion of livres to a debt means कर्जा, that had already risen to a 2 billion livres. पहले से ही बिलियन ऑफ livres का कर्जा था, अब 2 बिलियन का और बढ़ गया। अब जिन लैंडर्स ने पैसा दिया था, क्रेडिट दिया था, उधार दिया फ्रांस को, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया, दैट इज 10% ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द लेंडर ऑन लोन। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। अब जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, उन्हें अपना बजट का आधा से ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट के लिए खर्च करना पड़ता था। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, अब वो अपने रोज़मर्रा के खर्चे मेंटेन करने के लिए क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग। अब रोज़मर्रा डेली के उनके एक्सपेंसेस क्या थे? पहला, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स। अब इन डेली के रोज़मर्रा के खर्चों को बियर करने के लिए वो क्या करते थे, वो उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, मीन्स इस तरीके से भी
ये तरीका भी सफिशिएंट नहीं हुआ तो उन्होंने क्या करा, फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स एंड ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्स। अब जब ये टैक्स बढ़ाने से भी उनका काम नहीं चला तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंच सोसाइटी को उन्होंने 3 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें से पहला स्टेट था क्लर्जी। पिक्चर इज गिवन हियर, यू कैन सी दिस डायग्राम है। The first state is clergy, second is nobility, and third are other. Now, in first state, who comes? Number 1, the owner of the church. They comes under the first state. They have one privilege that they are not going to pay any tax. Second, nobility. Here comes in nobility, which people comes? The feudal lord. Means landlord. Okay. Father of church. Okay. Means noble people. That is why it is known as nobility. Okay. Landlords under the second states. Third state, big businessman, merchant, court official, lawyer, etc. Peasant, artisan, they all come under the third state. The burden of tax are beared by the third states. Okay, come to the next para. The society of state was part of the feudal system that dated back to the Middle Age. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. Now, what is feudal system here? Feudal system means that some land is given to the small farmer, and a small farmer will work on that piece of land, and all produce will go to the landlord. Okay, here small farmers are bound to work for them. They are bound to do the house square. That is called feudal system. Okay. Old regime is a term used to describe the society and institution before the 1789 in France. Now come to the next para. Now, the system of estates in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. However, only small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and other richer members of the third estate. The members of the first two estates, that is, the clergy and nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying tax to the government or to the state. Now, here 90% of population is of peasants, that is farmers, and a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of land was owned by nobles, the church, and other richer members of the third estate. The member of the first two estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. Now, the tax which is paid to the state is only by the third estate. First estate and the second estate, that is clergy and nobles,
they are exempted, means they are free from paying taxes. They are not paying tax. Okay. Government do not charge any tax from them. The most important of these were exemption from paying tax to the state. The noble further enjoyed a feudal privilege. These include feudal dues which they extract from the peasants. Now, what is feudal dues? Feudal dues means that the farmer, whatever he will produce in the field of farmland, the 1/10 of share he will pay to the landlord. That is called feudal dues. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in the house and fields, to serve in the army, or to participate in the building routes. So, dear student, this is sufficient for today, and we'll continue from where we are living today. Okay.